हे दोस्तों गुड मॉर्निंग हैप्पी संडे टू ऑल। कल नहीं आ पाया था, कुछ बच्चे का स्कूल का एडमिशन वगैरह के लिए जाना था, तो इसके लिए मैं आज सेटअप किया। और मुझे प्लीज बताइए अगर हम लोग संडे को मिला करें कि सैटरडे को, अगर आपको जैसा फिजिबल लगे आप लोगों के लिए भी। मे बी सैटरडे इज वर्किंग फॉर समवन, सो प्लीज लेट मी नो दैट थिंग। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो हम लोग उसको गो थ्रू करेंगे। आई विल ट्राई टू आंसर बेस्ट ऑन दोज थिंग्स। और अगर ये आपको किसी और तरह से हेल्प करता है तो डेफिनेटली दिस सेशन फॉर यू एज वेल। ओके, सो इट्स नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन who has thrown up these questions, but yes, it could be useful for everybody. Okay, so I will pick up without making any late. What is the role of BA in SDLC? So first of all, what do you mean by SDLC? Okay, SDLC, Software Development Lifecycle. So BA role varies in different lifecycle models. Example, in a waterfall model or sequential model, majority of the work of BA lies beginning of the project. The requirement, interaction with the stakeholders. First of all, identification of the stakeholders, then interacting with them, collecting the requirement, analyzing the requirement, taking confirmation from the client, and then documenting those requirements, taking sign off from them. Okay, and then explaining the same thing to the your engineering team, the development team, and then they will do the development. So during the development phase, you might be relaxed. You might have not that much work or burden in that phase during the development. Testing also, if you have a dedicated team to validate the requirements, okay, so that also you may not require to be 100% available for that activity. QA team definitely take help from BA to visualize the what kind of scenarios he has to validate or she has to validate on the requirements. So basically you might have already come up with the BRD and all that time, so then they can refer your document in terms of validations and writing the use case, the test cases. But assume, you can assume that during the development and testing phase you will not be 100% occupied. You feel little relaxed. But once testing is over, testing team said yes, is everything done, then yes, you have to again validate by yourself before reaching to the client. So you will make sure the requirements are implemented as per the ask, as per the expectation, and then you will give a demo to the client. So here the demo to the client is happen once it is passing the testing phase. It could be 1 month, 2 month, 3 month based on the module size of the functionality and module. So and then end of the phase of the like demo and then end user training or something, then you will be involved. So you will be having a little bit enough gap, relaxed time. You can enjoy that, you know. But if it is other model, I will not go to the RUP model. I will not go to iterative RUP model. B model, we have a lot of things, but the engagement are like that only. Okay, in RUP model, you might be having multiple modules, so you will be finishing one module, jumping on the other modules. You will not get enough time, relaxed time, which you get in the waterfall, pure waterfall model. Okay, so now I will come to the agile scrum process. So agile scrum process, definitely it's a full engagement. If you are not working on the requirement, you might be working on analyzing and prioritizing the requirement. So always engaging during the development testing phase, you will be working for the next sprint backlog. You might be refining the backlog. You might be collecting more requirement for future sprints. So the full engagement, that's why they have it is got so famous. Companies found it is the model allowing them to utilize all resources efficiently. That's the another reason for agile scrum process, you know. So in a agile scrum process, you will not get that leverage.
that freedom, continuously engaging, and you will be helping your team, or you will be interacting with the client to collect the requirement, okay, or prioritizing the requirement. So it will be full engagement. Hope I have answered my your question. Okay, you can thumbs like or something comment. What kind of database BA use? BA doesn't directly work on any databases. Okay, so it's his duty to just bring out the some field level information, like if is a front end form or front end screen has to be developed, so you will be pulling out what fields you need on a particular screen. So if you are defining the field information, it's a text field, it's a drop down field, it's a checkbox, it's a radio button, it's a single selection drop down, it's a multi selection drop down. So you should be able to provide the information like what field value should be going inside those field. If it is a drop down, the value should be what, it should come from which master data, which master table. And if it is a text field, what is the min and max length of that field, what is the data type, it's a varchar or unvarchar, numeric or alphanumeric, okay. So, and it's a mandatory or optional. So these things, once you define these things, database engineer or your developer even can create the tables according to that, and then he will define those validation points in the table. He will set up the tables according to that. Okay. So if it is you are in a kind of a role of BA analyticals, where you have to do the data kind of data scientist role, then you should be also, yes, a lot of involvement in the, because the Amazon, Flipkart, Uber, these they play with the data only. So if you are going to part of that organization, they will expect you are well versed of data analysis and writing queries, merging a lot of things. I mean, and then pull out the meaningful information out of that. So that expectations generally falls in these kind of organizations who deals in the data. But generally, if you know little bit on SQL, some basic queries, that's fine. Select query, insert query, delete query, drop query, join queries, that's all fine for you. Okay. If you need to work on this kind of scenarios, environments, you should be able to do that. Basic things. Okay. You want to validate the data inserting on a submit button is correctly in the correct table or not. So you should be able to validate, right? Okay. Nothing should be more expected than that. Okay. Until unless you are not in such kind of organization, the example I have given, Amazon, Flipkart, and all. The next question is BA work alone or there is a team of two, three BA in a project? Depends. At least I have worked in a multiple projects where there is a multiple BAs work together. So it is like working together doesn't mean you will do half of the document, the rest of document will be done by the other person. No, it's not like that. You will be given a work, you have to do alone. So while you are working on piece of work, other person, other BA might be working on some other document for that piece of work. Okay. So it's not a distributed. Otherwise, it will lose the ownership. That's why even though there are multiple BAs in a team, they work closely, but ownership will be maintained. Okay. RAD model. Adil, what is RAD model, yaar? What is this? I even don't know. RAD model. कहाँ है? Which company you use यार these things? ये नया नया मॉडल क्या आ रहा है भाई? रैड मॉडल क्या होता है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अरे ये क्या होता है जो अपना एजाइल स्क्रम है? एजाइल कौन सा था पहला? उसको क्या बोलते थे हम लोग? एजाइल, नॉट कैनबन, क्या होता था यार वो? एजाइल स्क्रम और क्या होता था दूसरा वाला यार? एजाइल स्क्रम,
XP something, Agile XP model, extreme programming, extreme programming XP model. So that XP model is nothing but the rapid application development. This is nothing but the, you will not do any documentation, where developer itself go and interact with the client. He will pull up the understanding. He will do something and push it to. Ownership will not be there in that case. The code is going in to the production. It may be a faulty, because there is no person who is taking ownership, like the things should be matching to these acceptance criteria, it is adhering to the client requirement and all, because there is no documentation and all. So that's what is a failure. XP never went success in that case. That's why Agile Scrum is successful, because the BA or PU is the ownership. He ensure the delivery is going as per the requirement, as per the expectations from the client side. Okay, so people can do that rapid application development or extreme programming, but it never going to be successful, because developer will not take ownership on the requirement. He is not going to do any documentation, taking sign off and all that. That's why it's a failure. Okay. uh, Ashwini, Ashwin, what is the mitigation? Mitigation is nothing but, take example of, if your scope is creeping. Okay, so how you can avoid that scope creep? First of all, what do you mean by scope creep? Okay, a lot of noise coming, so I'm shutting the door. So mitigation plan generally happens at various levels. Either your scope has increased, or your project timeline is moving ahead, which you are not able to deliver your project in time. Okay, so a lot of these kind of scenarios where you need to be come up with your mitigation plan. Example, you having a risk in your project because of non-availability of another system which you need to interact and pull up the data, or you are dependent on some other source system which they need to be ready when you will be started development of your piece of work. Okay, so you should be having some mitigation plan. मिटिगेशन प्लान जो फिल्मी में क्या होता है वो, अब भाई प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी लेके आओ। प्लान बी है हमारे पास, वही है प्लान बी, प्लान सी, ये सब। तो यहाँ पर भी मिटिगेशन प्लान ऐसे ही होता है कि हमारे पास कोई, हमने एक थॉट प्रोसेस, एक प्रोजेक्ट प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर वो नहीं हुआ उस तरह से, तो हमारे पास में मिटिगेशन प्लान क्या है। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपके पास में रियल डेटा चाहिए आपको अपने एपीआई को रन करने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, नहीं मिला हो, वो सिस्टम रेडी नहीं है, रियल डेटा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंथेटिक डेटा, कुछ डमी डेटा बनाकर अपने एपीआई को, अपने सिस्टम को रेडी करोगे। और जब भी रियल डेटा अवेलेबल रहेगा, आपका सिस्टम अधेर कर लेगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट इज नॉट चेंजिंग, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट having a real data or synthetic data, right? So that's a mitigation plan. अगर आपका प्रोजेक्ट प्लान फेल हो रहा है, डिलीवरी टाइमलाइन फेल हो रही है, तो मिटिगेशन प्लान क्या है? आप एक सम साइड बाय रिसोर्सेज को रखो, ताकि रियल टाइम में आने में आपको उनको पुल अप करके अपना काम फास्ट करवा के डिलीवर करो इन टाइम में। ये प्रोजेक्ट इसको, ये टाइमलाइन स्क्रिप हो गया। स्कोप स्क्रिप क्या होता है उसमें भाई, क्लाइंट अगर तुमको बार बार बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है या रिक्वायरमेंट वो ऐड करता जा रहा है, तो इट मीन्स आपका डेफिनेटली आप टाइमलाइन तो मैच नहीं कर पाओगे। आप बार बार डॉक्यूमेंट रिवाइज करते फिरोगे, बार बार कोडिंग रिवाइज करते फिरोगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो वो आपका मिटिगेशन प्लान क्या है? आप उनसे एग्रीमेंट करके रखो, भैया ठीक है हम करते रहेंगे, लेकिन हमारे बिलिंग में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, हमारा टाइमलाइन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो रिस्क, जो हमारा रिस्क रजिस्टर रहता है, चेंज रजिस्टर, इसको चेंज रजिस्टर बोलते हैं, उसको मेंटेन कर लो। और उसमें जरूर मेंशन करो कि भाई ये रिक्वायरमेंट पहले ऐसा था, ये चेंज हुआ, ये इम्पैक्ट है, इतना टाइमलाइन हमारा इम्पैक्ट पड़ गया। आराम से आप मिटिगेशन प्लान में डाल के क्रल से अप्रूवल ले लो, काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का प्रोजेक्ट था, वो 1.5 साल तक चलेगा। क्लाइंट को भी मालूम रहेगा कि हाँ भाई उनकी वजह से ये हो रहा है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके रिसोर्सेज को पेमेंट भी आएगा क्लाइंट से। सही है ना? अच्छा, I hope I answered. Let me just complete the few questions which I have started, then I will jump on the other questions, Adil and Ashwin. Okay.
BA work alone. Huh. So I think I answered that right. BA can work alone or can work on along with the two three BAs in your team in your project, but you should be very careful. You should be very understanding. Like it's not like one you will be working on a document. Half of the document you have worked, and rest of document you will throw to him. Boss, I have done half. Since you are also BA, please complete the rest of. No, it's not like that. You will be picking up the things, you will be completing that thing. Okay, now when you come on the requirement, user story creation, all that, yes, that in that case they can help. So you will be writing his user stories for your piece of work, and then he will be writing his piece of work. All together it's going to be part of the same project, so it's fine. Okay, ownership should be ownership should be there, that's what. Okay. Now, next question: have you failed a deliver client in any instance? I don't remember, boss. If you are working in a company, they will make sure you will deliver. There is no much. At least I haven't faced that one. It could be possible that failure because of client doesn't aware what they need, or you are not so much equipped with the understanding that is causing the delay in the project and failure of the project. Okay, so that's why that's why you definitely can fall in that soup, but try to avoid at very initial phase itself. That's why the risk register, change register, these will help you, so you will not get that blame. Okay, see, project failure when the client doesn't know what he is looking for to implement, what kind of software is looking for, so definitely it's a failure, right? You cannot visualize the client mind. So in that scenario, generally face. Otherwise, technology stack wise, every company is having those people. They will deliver you as long as you are covering with the requirement. They will build and deliver it. So that's not the case. Okay. If someone say user story is not correct, how we will tell that story not correct means it's no one who can come and tell you your story is not correct, as long as you are able to define what you are expecting in that user story. So if you are covering the standard pattern, writing the user story, writing the acceptance criteria properly, okay, each and every point, there could be a chance you might missed out because of heavy workload or something, some scenario you missed out in acceptance. That's absolutely fine. Basically, you should invite others. Boss, I came up with this. Please review and please suggest further. Don't feel ashamed like something is oh, why he is suggesting. Let them suggest. Some scenario it didn't click in your mind, might be clicked in your developer's mind, right? Or might be clicked on your tester mind. It's okay, it's very fine. It's a practice. Even when you go through the grooming process, the grooming process nothing but explaining your user stories to them, and they can question and then see if your question is not answered through your user story, it means there is a gap. Two scenario: either is a gap or the question is invalid. You need to counter in that way. Correct. If he's asking irrelevant question or is not part of this, cannot be part of this user story, it could be covered in some other story. You just please tell me, oh boss, it's okay. Your question is valid, but this is part of the other story. The user story, this go through and that, and this is not prioritized. So please focus here. Like that, you can communicate. Other part, if you really think yes, it should be part of this one, you have missed it. Go ahead and correct it. There is no problem at all. Okay, it's teamwork. You might be missing something during the requirement and gathering and documentation. They might be missing during the testing, development and testing phase, that you will correct them during your validation after the QA testing phase. Correct. So together we are making a perfect system. Okay. Who is the scrum master? Certified one, developer QA in the team. Who is the scrum? See, generally it's a scrum master, certified scrum master. Okay, that knows how to run a team, how to run a scrum team. So he will be knowing the processes that has to be followed up in the agile scrum.
He know the daily activities, he know how that mitigation plan he has to come, team escalation metrics he has to come. Suppose team is having some issue, they will report to the scrum master has to take it forward and resolve that issue. So scrum master role is very unique, even though he doesn't need to bother about what requirement is, but he will just ensure the things are going well as per these ceremonies. That's it, that will he will ensure. Scrum Master also responsible to give the Scrum sprint demos. If it is not willing to do or he is not comfortable, yes, a BA can do, a PO can do also. Okay, so yes, certified Scrum Master is a essential and a practical role for us play as a Scrum Master role. Although, if there is no that kind of role is available in your company, people generally appoint developer or tester as a scrum master. So it varies. If you have a big organization, they will have that roles. If doesn't have, they will appoint someone. If someone appoint me, they will appoint BA. I have played that role here. What we can do? I have played that both roles. I only define things. I only set up calls. I only clarify with the teams. I only taken the problems with them. So it's a depends. It's not a big role or something which you need to afraid of something. But yes, it's an essential part of the Scrum team. So they will ensure the things are going well in terms of if people are logging the efforts daily basis or not. The graph charts, the Scrum, the sprint burn down and velocity chart is coming properly or not. Okay, so he will ensure some critical things. Okay, you might as a BA or PO you might not get chance because you are focusing on the further requirements and analysis and interactions with the clients, right? So you might cannot focus on those things. That's why Scrum Master is there. He doesn't have these things. He's need to ensure these things which I just spoken out. Okay, so I hope I have answered. Okay, next question I will take. Ashwin, sir, to solve mitigation, we need to put resource on work in a week. नहीं ऐसा नहीं होता है. See, mitigation तक वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए होता है. मिटिगेशन प्लान होता है कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सके उस स्टेटस तक पहुंचने के लिए. एक्चुअली देखिए यही होता है इसका मतलब. आपको लगे कि हाँ हम लोग उस ट्रैप में फंस रहे हैं, तो वो मिटिगेशन प्लान को फॉलो करके आप अपने डिलीवरी को इंश्योर करो, rather than you reach to that deadline and then you started thinking अरे अब क्या करें. ये चीज होता है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोप स्क्रिप हो रहा है, आपके रिसोर्सेज फॉलो आउट कर रहे हैं और आप तो पहले से ही आप उनको प्लान कर लो. आप मोर रिसोर्सेज के ले आओ या एक आध घंटा 2 घंटे स्ट्रेच करा लो डेली बेसिस में या वीकेंड में. वो जैसा भी है कंपनी की पॉलिसी, अगर कंपनी देती है एक्स्ट्रा पैसे काम करने के लिए तो करा लो. बट क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ होती है, हमको नहीं डिस्टर्ब करना. आई ऑल्सो पर्सनली डोंट वांट टू वर्क ऑन द वीकेंड्स और एक्सटेंडिंग लेट नाइट्स, राइट? So, as a BA, you should be ensuring, you should be correcting the right things, and you will be having a clear understanding with the client. Boss, you are asking to do this one. Are you sure you want this one only? Because later it will be a change request or it will be code change, right? A document change. It will be change request that will impact on our deliverables. So client will go and back to his team and he will check further. Boss, they will talk to their SME, so they will talk. They will ensure they are coming with the right requirement rather than saying something in one time and later they say, "Oh no, I want in this way." Okay. So that's the thing. We should be avoiding those situations. But if it is yes, in the consent of the team, we can ask team to work late nights or weekends. But we should not fall in that. So, Adil, simplify UAT and what kind of organization use it. UAT क्या होता है? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. आदिल भाई, इसको क्या कहते हैं हम लोग? जैसे अपना नॉर्मल क्यूए टेस्टिंग कौन कौन सी होती है? देखो, सबसे पहले होती है आपकी कंपोनेंट टेस्टिंग, जो आपके डेवलपर करता है. सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो भी डेवलपर करता है, टेस्टर भी करता है. और टेस्टर क्या करता है? फंक्शनल टेस्टिंग करता है,
एनएफआर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेस्टिंग करता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करता है। पर सम बड़ी कंपनीज में परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए सम अदर डेवलप इंजीनियर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग ही करते हैं, केवल उतने एक्सपर्ट होते हैं। बट अगर नहीं है तो अपना डेवलपर ही करेगा, या सॉरी क्यूए ही करेगा उसको। अब आप सोचिए, यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग, ये चारों चीजें हो गई है। सोचिए आपका क्या है, इसका मतलब आपका सिस्टम मैच कर रहा है, 99% मैच कर रहा है जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। अब एक फाइनल चेक क्लाइंट करेगा। क्लाइंट क्या करेगा, अपनी तरफ से कुछ टीम सेटअप करेगा, और उसकी खुद की अपनी क्यूए की टीम होगी जिसके अपने खुद के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखे होंगे। अब वो क्या करेगी, आपका जब कोड यूएटी इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होगा तो वो लोग अपने केसेस को रन करेंगे। अब फिर आपके पास आएंगे, भैया देखो इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए, आप देखो क्या करना है। तब आप वहां वैलिडेट करोगे उनका यूएटी केस जो रन कर रहे हैं, भैया ये एज पर रिक्वायरमेंट है भी कि कुछ नया ही मैंने बोला था एबीसीडी लिखने को, वो डीईएफ चेक कर रहे हैं वहां बैठ के टेस्ट केस में। तो ये भी तो इनवैलिड है ना, समझ रहे हैं ना आप। अब वो प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल हमने डिप्लॉय किया है, वो वहां पर फाइनेंस का मॉड्यूल के केसेस टेस्ट कर रहे हो, तो वो इररिलेवेंट है। अब फाइनेंस के प्रोक्योरमेंट के मॉड्यूल में फाइनेंस का मॉड्यूल का सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी तो हम नहीं डेवलप करें ना। तो ये चीज होता है। आप यूएटी के जब वो लोग फेल पास करके लिस्ट भेजते हैं क्लाइंट वाले, तो आप वैलिडेट करते हो, भैया ये तो कहीं है ही नहीं, पहला केस। दूसरा केस, वाकई में ये एक इशू था जो आपकी टी आपके आप आपकी इंटरनल टीम पकड़ नहीं पाई प्रीवियस इन्वायरमेंट्स में, डेव इन्वायरमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट, इसके बाद आपका नॉन एनएफआर इन्वायरमेंट, परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट पकड़ ही नहीं पाए आप। वो सिनेरियो ऑल टुगेदर मिसिंग था। तो यहाँ पर आपकी आती है बात, एक क्या कहते हैं ना, रेट्रो करते हैं ना, रेट्रो। तो वहां पर रेट्रो करते हो अपनी टीम के साथ में, गैप एनालिसिस करते हो, वो क्या कहते हैं उसको, फिश बोन एनालिसिस। वो हम लोग कहाँ गलती की है, इसको कैसे छूट गया, ये सिनारियो मिसिंग था कि कोडिंग में ही गलती थी, वो सब फाइंड आउट होता है फिर। ठीक है ना। तो वहां पर भी ऐसे नहीं होता है कि हम किसी एक को ब्लेम कर देते हैं, वहां पे एज ए टीम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यही वर्क कल्चर है। गलती किसी की भी हो वो पूरी टीम को आता है, तो एज ए टीम ही हमको काम करना होता है। अगर हम सोचे यूनिट टेस्टिंग और उसका काम है तो भाई हम क्यों करें, तो ऐसा नहीं होता है। सबको मिलके इंश्योर करना होता है कि अच्छा प्रोडक्ट जाए क्लाइंट के पास में। ठीक है ना। तो ये चीज है। ठीक है ना। और क्या है अश्विन सर, आई एम स्टडिंग व्हाट यू हैव गिवन ओल्ड यूट्यूब, what you yeah, please go through, see day one onwards, whatever the videos I have given now, it will give you a huge clarity, boss, I'm telling you. Many aspirants has got selected in the companies because of these videos. They were thanked to me, they congratulate, I have sent the congratulations also. It's very nice, people get benefit out of these videos. You will make your life better, serve your families, okay, shape up your career. So nothing best out of that, yeah. Okay, please be learn, okay, keep on learning. और क्या है, आदि आदि भाई क्या पूछ रहे हैं, सर आई सी बिजनेस एनालिस्ट इन कंसल्टिंग कंपनी, देयर वर्क रिलेटेड ओनली बिजनेस प्रॉब्लम, सो दे लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, और ओनली गोइंग इन आईटी कंपनी नीड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल नॉलेज। ऐसा नहीं है यार। कंसल्टिंग कंपनी क्या होती है, यही तो होती है, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, सेंचर है, ये सब कंसल्टिंग फर्म्स हैं। इनके खुद के अपने प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, ये लोग रिसोर्सेज को हायर करते हैं अपने जो क्लाइंट होते हैं उनकी सॉफ्टवेयर को डेवलप करके डिलीवर करने के लिए। ठीक है ना। तो वो क्लाइंट जो जैसा बोलता है उसी मॉडल में आपको काम करना पड़ता है। क्लाइंट बोलता है मुझे एसडीएलसी मॉडल में सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरा यानी वाटरफॉल मॉडल में चाहिए, तो वाटरफॉल मॉडल में आप काम करोगे। वो बोलते हैं मेरे को एजाइल स्क्रम स्टाइल में चाहिए, तो एजाइल स्क्रम में काम करोगे। तो डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट इज विच इज इन द कंफर्टेबल यू विल बी डूइंग एंड डिलीवरिंग। ओके। तो अगर आप 5 साल काम किए किसी कंपनी में, वहां पे सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिला है, तो भाई लर्निंग का नहीं मिलेगा आपको चांस। लेकिन
मैं आपको ये चीज इंश्योर करता हूँ कि जो ठीक ठाक कंपनीज हैं जो सर्विस बेस्ड हैं, यानी कि जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, उनमें आपको चांस मिलता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में काम करने का, रादर देन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड में एक ही होती है टेक्नोलॉजी जो लोग फॉलो करते हैं क्रॉस, ठीक है ना। तो अगर आपके स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ है, आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो, तो कंसल्टिंग फर्म्स आर अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अश्विन क्या पूछ रहे हैं कि माई पास्ट एक्सपीरियंस इन फाइनेंस कंपनी। भैया यू आर सो लकी, बहुत अच्छी बात है। आई एम टोटली फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। आप टेक्निकल हो गए हो, knowingly unknowingly you are technical because you are having a finance background domain which is highly demand in the market. You please tell me what kind of questions are possible in the banking domain. The banking domain is a vast. You are in the payment thing, you are in the card side, cards, or insurance side, the account side. Lot of areas are there in the finance and all, ठीक है ना। तो जनरली जो अगर जो ये रहता है ना पेमेंट, जो इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट्स होते हैं, वीजा, इन सब पे स्विफ्ट होता है, जो पेमेंट गेटवेज होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे को है नहीं नॉलेज एक्चुअली फिनेंस बैकग्राउंड में। मेरी अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए कि मुझे अब तक किसी कंपनी में चांस नहीं मिला है जहां पर मैं लर्न करूं और एक और डोमेन बिल्डअप करूं अपने लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास में है, आई विल I will suggest you start applying to the Deloitte, Accenture, State Street, ENY. There are a lot of organizations who work on the finance domain. Okay, I tried multiple times, but I didn't get chance in this company even for one interview. They're rejecting because they know they are looking for a finance only. So I don't have, they're rejecting. Simple. Okay. A lot of questions you can find on the Google and all that, finance BA interview questions and all that, and you just attend it, right? You just apply and attend it. While attending, you will learn what kind of questions they are asking. I am not helpful because I didn't get chance even single time to get interview. Otherwise, I might have also got some questions to tell you this kind of question they are asking. Okay, so that's the problem. Okay. Adil, so it has nothing to do with the business analyst. हाँ आदिल, ये क्वेश्चन ऊपर वाले के रिलेटेड था ना। ये किस क्वेश्चन के रिलेटेड है यार आदिल, मेरे को समझ में नहीं आया। सिंपली यूएटी, हाँ यूएटी की बात कर रहे हैं ना। हाँ यूएटी, यूएटी नहीं है। यूएटी बिजनेस बीए नहीं करता। यूएटी जो है क्लाइंट साइड करता है, तो वो बीए का काम ही नहीं है यूएटी, ठीक है ना। लेकिन जब आप ये करते हो ना, मतलब जब यूएटी होने के बाद में प्रोडक्शन पे मूव करते हो, तो जो ट्रेनिंग देनी होती है क्लाइंट को, वो थोड़ा सा आपको वहां पे हेल्प देनी पड़ती है उनको। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैंने कंपनी में काम किया था, तो वहाँ के यूजर्स को मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ी थी जा जाके। ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ये फंक्शनैलिटीज कैसे रन होती हैं, ये बेनिफिट क्या है फंक्शनैलिटी का, ये डेटा कहाँ से आ रहा कहाँ जाएगा, अप्रूवल कहाँ से आ रहा कहाँ जाएगा, ये पूरी फंक्शनैलिटीज आपको समझानी पड़ती है उन टीम्स को। क्योंकि वो लोग माइट भी कोई दूसरा सिस्टम यूज कर रहे होते थे, या कोई मान लिया पेपर वर्क पे काम कर रहे होते हैं, तो सिस्टम पे पहली बार आ रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है उनको थोड़ा सा। बट यूएटी फेस तो क्लाइंट साइड वाला ही करता है। अगर सोचिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, वैसे वैसे होता नहीं है कि क्लाइंट बोले कि आप यूएटी टेस्ट केसेस बनाओ। ऐसा बहुत रेयर है भाई, बहुत रेयर है। मतलब प्योरली नॉन टेक्निकल है अगर क्लाइंट, उसके पास में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक आईटी टीम खड़ा करके ये सब चीजें करवा सके, तो भाई उसमें क्या ही करिएगा आप। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है आपको, तो बेसिकली आपके पास जो फंक्शनल टेस्ट केसेस है ना, ये वाले क्यूए के थ्रू लिखे, वो आप उनको यूज कर सकते हो। थोड़े एक आध दो और ऐड कर दो, क्या करोगे आप? थोड़ो ना क्लाइंट की माइंड को रीड करके थोड़ो ना आप यूटी टेस्ट केसेस लिख पाओगे, तो क्लाइंट ही लिख सकता है। तो ये सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप ही करो और आप ही उनको दिखाओ कि अच्छा देखो ये ऐसे ऐसे रन हो रहा है, मैंने ये किया और देखो पास हो गया है। क्लाइंट ताली हो जाएगा, ओ भैया पास हो गया, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, चलो कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है ना। तो वो हो सकता है सिचुएशन, बट जनरली ये क्लाइंट साइड से होता है। क्लाइंट साइड की अपनी टीम होती है, ठीक है ना। आरएससीआई मैट्रिक्स वही स्टेक होल्डर एनालिसिस भैया, अश्विन।
स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं हम लोग। मैंने आरएससीए मैट्रिक्स का पूरा वीडियो बनाया है, आप देखना उसको जाके। उसमें हम लोग स्टेक होल्डर फाइनलाइज करते हैं कि कौन सा स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल है, रिक्वायरमेंट। मल्टीपल पर्सपेक्टिव में बना सकते हो आप। आरएसए मैट्रिक्स आप इंटरनल टीम के लिए भी बना सकते हो, क्लाइंट स्टेक होल्डर के लिए बना सकते हो। इंटरनल टीम के लिए कैसे बना सकते हो कि कौन क्या क्या काम करेगा, और क्लाइंट साइड के लिए बना सकते हो कि आपको किससे क्या क्या काम लेना है। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग रिस्पॉन्सिबल कॉलम में एक नाम लिख दिया। इसका मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपको इससे लेनी है, इससे डिस्कस करके लेनी है। रिक्वायरमेंट अप्रूवल इससे लेना है, ठीक है। यूएटी इससे करना है, वो नाम लिख दोगे, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म वाले को खाली लूप में रखो हमेशा। कंसल्टेंट को क्या करना पड़ेगा आपको, आपको कभी भी कंसल्ट भी करना पड़ेगा उसको। उसको जब आप मीटिंग सेटअप करोगे तो उसको रखो अपने सीसी में, सीसी में रखो, टू में नहीं, सीसी में रखो। अकाउंटेबल कौन होता है, जैसे एसएमईज होते हैं। एसएमईज जो जो आपके डॉक्यूमेंट साइन ऑफ करते हैं वो अकाउंटेबल है। बीआरडी कौन साइन ऑफ कर रहा है, वो करेगा। यूएटी कौन साइन ऑफ करेगा, वो करेगा, अकाउंटेबल वाला। और रिस्पॉन्सिबल वाला कौन है, आप रिक्वायरमेंट किससे लेना है, आपको किसको किसके साथ में बैठ के प्रायोरिटाइज करना है, ये सब चीजें। तो डिफरेंट पर्पस के लिए ये आरएससीआई मैट्रिक्स यूज होता है, ठीक है ना। तो इंटरनल और क्लाइंट साइड के दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। वो पूरा वीडियो है, आप देखो जरा। एसएमई क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है, जैसे फिनेंस का है, जैसे फिनेंस के हो आप, फिनेंस डोमेन एक्सपीरियंस है ना आपको, तो आप एसएमई बन सकते हो कि फिनेंस डोमेन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, मैं एसएमई हूँ, मुझे सब आता है फिनेंस का। आपको कोई रिक्वायरमेंट चाहिए फिनेंस से रिलेटेड, मैं दूंगा। तो क्लाइंट क्या करता है, अपॉइंट करता है एसएमई, उनके तरफ से एक ऐसा आदमी जो आपको सारी रिक्वायरमेंट देगा क्लाइंट की। क्लाइंट को क्या क्या चाहिए ना, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको एसएमई देगा। क्लाइंट कौन है, वो बॉस है, उसके पास टाइम नहीं है, वो ट्रेवल कर रहा है फ्लाइट में, उसके पास टाइम नहीं है, आप मीटिंग सेटअप करोगे, इसलिए वो एसएमई अपॉइंट कर देगा। भाई इससे ले लो जो लेना है। प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल का हो सकता है मल्टीपल एसएमई हो, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का एक हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक हो, सप्लाई चेन का एक हो, तो आप उनके साथ में मीटिंग सेटअप करके रिक्वायरमेंट ले सकते हो, ठीक है ना। प्लीज सजेस्ट सम वेबसाइट और एनी प्लेस वेयर कैन गेट डमी प्रोजेक्ट एंड वर्क। अरे डमी प्रोजेक्ट का दिया था ना यार, मैंने एक डमी प्रोजेक्ट कैसे रहता नहीं है यार, वो पेड होते हैं फिर उसमें मिलता नहीं है कुछ यार। मैंने आपको एक लिंक दिया था ना उसका, इसका मैंने एक केस स्टडी का, मैंने उसमें पूरा बीआरडी, एफएसडी, वायरफ्रेम डायग्राम सब बना के दिया था ना, उसको क्यों नहीं आप लोग करना क्या है कि वो एक एज ए रेफरेंस रखो, फिर एक नया केस स्टडी खूब मिल जाएंगे आपको गूगल में। केस स्टडी पकड़ो और शुरू करो उस पर लिखना, और देखो आप कितना समझ पा रहे हो उसको, कितने अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना, ऐसा। तो हाँ वही वाला, वेल अफ्रीका वाला, करेक्ट, करेक्ट, यही वाला। उसको पहले उसको समझो। आपको समझना यहाँ ये है कि ये सिनारियो से ये रिक्वायरमेंट कैसे ड्राइव हुई, ये आप समझ गए तो आप कोई भी केस स्टडी से रिक्वायरमेंट ड्राइव कर सकते हो। कल को आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करने जाओगे तो क्लाइंट जो आधे घंटे तक जो बोला डजंट मीन्स एवरीथिंग इज योर रिक्वायरमेंट, नो। उनमें से आपको फिल्टर करना पड़ेगा ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, और दैट्स व्हाई यू विल बी जस्ट राइटिंग सम एमओएम। एमओएम का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे लिखो ये है, ये है, ये है। क्लाइंट को बाद में भेजो एमओएम करके, भाई देखो मैंने ये कैप्चर किया, बताओ इसमें कुछ गलती तो नहीं है, या कुछ मैं मिस कर गया हूँ, प्लीज ऐड करो, या कुछ ऐसा। क्लाइंट बोला हाँ सब सही है, इसका मतलब देन यू कैन कन्वर्ट दैट एमओएम एज योर रिक्वायरमेंट। क्लाइंट बोलता नहीं नहीं ये मिसिंग है, तो उसको ऐड कर लो, खत्म बात। सही है ना। तो ये ऐसे ही चलता है, थोड़ा फोकस करना पड़ता है, रियल टाइम फोकस बहुत करना पड़ता है। आप देखिए इसको, ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ इसमें 1 2 का टेबल, 3 का टेबल याद कर लिया तो लाइफ टाइम 2 का टेबल, 3 का टेबल कभी चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है इसमें।
हर एक क्लाइंट अलग होता है, हर एक प्रोजेक्ट अलग होता है, हर एक प्रोजेक्ट की अपनी स्ट्रेटजी होती है, उसका अपना वर्क स्टाइल होता है, उसके अपने टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। तो ये वेरी करता है, लेकिन अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज बहुत मजबूत हैं तो आप कहीं भी फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? इसलिए हवा में रह के ऊंचा ऊंचा सोच के फटाफट फटाफट कुछ तो जल्दी जल्दी करके करना नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसीज पक्की करो अपनी पहले, फिर सब सब कुछ कर ले जाओगे, 100% कर ले जाओगे, कुछ भी आने दो। ठीक है ना? थैंक्स आदिल भाई, थैंक यू। अश्विन का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑनर एंड बी इज सेम इन एजाइल? हाँ बिल्कुल है, ये सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोडक्ट ऑनर क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट भी अपना एक प्रोडक्ट ऑनर रख देता है। तो आप डेमो जब करते हो ना स्प्रिंट का, तो उस प्रोडक्ट ऑनर को करते हो, ना कि क्लाइंट को। वो प्रोडक्ट ऑनर अपने क्लाइंट को समझाएगा, बाद में समझाता रहेगा। तो ये सब, अदरवाइज अगर क्लाइंट साइड प्रोडक्ट ऑनर नहीं है तो आप ही प्रोडक्ट ऑनर हो। तो आप डेवलप करोगे रिक्वायरमेंट को, आप टेस्ट करोगे, वैलिडेट करोगे, स्प्रिंट डेमो दोगे डायरेक्टली क्लाइंट को। ठीक है? तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, वही काम है। ठीक है ना? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलो फिर, आज के लिए हो गया, 40 मिनट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड, और मुझे बता देना आप लोग कमेंट में कि संडे को मिला करें कि सैटरडे को मिला करें, जो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो उस दिन आया करेंगे हम लोग। ठीक है ना? और मिलते हैं, आप लोग पढ़ाई जारी रखिए भाई, और नौकरी लीजिए, क्या करेंगे, घर चलाना है सबको, सबको अपनी अपनी लाइफ मैनेज करनी है भाई। ठीक है? सोच समझ के खर्चे करिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो ऐसा है। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू आदिल, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। बाय बाय।